नमस्कार, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार मैं स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा फाइनल प्रेजेंटेशन है, जो बाकी लोग बच्चे हैं, अभी हमारे पास तीन ग्रुप मैंने कर दिया है, ग्रुप ए बी और ई। ठीक है ना। जो आपके ग्रुप सी का ऑलरेडी हो चुका है और उससे जो कुछ बताए गए हैं वो अभी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं अगर पहले अवेलेबल करना चाहें। और जो ग्रुप बी के थे उसके कुछ कैंडिडेट हमने ए में डाल दिए हैं, कुछ बी में और ई में। तो आज तीन ग्रुप का प्रेजेंटेशन होगा। तो अभी कौन सा ग्रुप पहले तैयार है वो अभी सामने आ सकते वॉलंटियर। सर ग्रुप ई। ग्रुप ई। ठीक है, ग्रुप ई में सर कौन कौन से हो गए? एक दो तीन चार है ना। पहले हम ग्रुप ई फर्स्ट पहले। आवाज आपकी कट गई अभी। सर ग्रुप बी पहले प्रेजेंट करना चाहते हैं। ग्रुप ई। सर बी बी। ग्रुप डी तो ग्रुप बी के कितने लोग रह गए थे? सर 4 है हमारे। चार है ना। तो ग्रुप डी में से हमने कुछ ट्रांसफर किए हैं इधर उधर करके, ग्रुप ए बी। तो डी में चार में आप कौन कौन है पहले बताएं। सर सजाद अहमद डार, हम्म। मुंतजर अली डार, हिलाल अहमद रथर एंड जुबैर अहमद लोन। ठीक है। ओके 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 ओके। ठीक है, पहले कौन करना चाहेगा? ग्रुप ई या ग्रुप डी, कोई भी करे, मैं क्वेश्चन से। सर ग्रुप बी। तो चलो करते हैं। तो पहले कौन? यस, आजा सबसे पहले। पहले हम क्वेश्चन आंसर आपका कर लेते हैं। यस। आप में से कौन आगे लीड करेगा बताओ। पहले आप शुरू कर देते बिना देर किए। यस सर, शुरू कर देते हैं। सर मैं ही। सजाद आप ही से शुरू करें। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं भी हूँ ग्रुप बी में, राहिल। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरू करें। पाँच हो जाएंगे ना फिर, तो पाँच हम लोग हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, पाँच कर दिया। तो ठीक है, सजाद अहमद डार, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ। तो पहले क्वेश्चन आंसर तैयार हैं तो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन आंसर करेंगे। यस सर। हाँ मैं भी। आप मुझे ये बताइए कि मेरा सवाल ये है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। जो आईपी एड्रेस IPv4 है, ये कितने बिट्स का है? हाउ मेनी बिट्स ऑफ IPv4? आजाद। यस सर। हाँ बताएं। याद आए, भूल गए? सर 32 बिट्स का। 2 बिट्स क्या है? यस सर। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि इन्हें कितने ग्रुप में बांटा गया है? यस सर। कितने ग्रुप में बांटा गया है? भूल गए? कितने ग्रुप में सर बांटा है? सर आईपी एड्रेस ग्रुप ई ने सर ये प्रिपेयर किया है। मेरा पहला सवाल था जो IPv4 है वो कितने बिट का है, तो सजाद ने कहा 32 बिट का। बिल्कुल सही बताया आपने। अब मैं ये पूछ रहा हूँ जो IP एड्रेस है इसको कितने ग्रुपों में बांटा गया है? ओबेज बताएं। सर वॉइस इशू आ रहा है। सर फाइव ग्रुप ए बी सी डी हाँ, ई। क्लास A क्लास B, इसे ग्रुप कहिए या यस सर। क्लास कहिए? एक B C D एंड E। ई सर। ठीक है ना, क्लास A B। यस। ठीक है। ठीक है, दो यस। हो गए। और आप में से और कौन? हिलाल बताएंगे। हिलाल है आपके साथ? हिलाल अभी देयर? सर एक्चुअली जो ये है ना आईपी एड्रेस सर, ये ग्रुप ई ने प्रिपेयर किया है सर। ओके 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 ओके। ठीक है, ग्रुप C ने इसको ज्यादा। ठीक है, समझ गए। यस सर। आपने क्या तैयार किया है सजाद? आपके ग्रुप में क्या प्रेजेंटेशन है?
ज़्यादा अनम्यूट हो जाइए, म्यूट हो गए मुझे लग रहा। OSI reference model. मंजीर, OSI reference model sir. Group B. ग्रुप बी। Sajjad. yes sir, हमने OSI reference model तैयार किया तो है। आप शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, उसी में हम बीच बीच में क्वेश्चन कर लेंगे और आपके सभी ग्रुप के लोग उन क्वेश्चन को सुन के आंसर दे देंगे, ठीक है ना? मैं ही कर दूंगा उसमें क्वेश्चन। ओके, तो अभी आप पीपीटी के माध्यम से शेयर करेंगे या डिस्कशन करेंगे? सर PPT के। ठीक है, तो मैं आपको परमिट कर रहा हूँ, पहले शुरू कीजिए, टाइम बच जाएगा जिससे ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, नाउ यू कैन शेयर द पीपीटी एंड स्टार्ट। उसी में बीच में सवाल पूछूंगा और आपके ग्रुप के लोग आंसर देंगे, राइट? चैट के ओके माध्यम से बता देंगे, इससे क्या होगा, टाइम दोनों बच जाएंगे और आप ओके कंफर्टेबल भी रहेंगे इन कंपेरिजन टू बोलने के बजाय। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। बाकी लोग समझ गए ना? ग्रुप प्रेजेंटेशन के साथ ही मैं क्वेश्चन रख देता हूँ, ठीक है, उसी ग्रुप के आंसर देंगे। सर। तो अभी आपका ग्रुप बी का प्रेजेंटेशन है, सजाद और मुंतजिर, और पूरे टीम के लिए एक बराबर। ठीक है, चलिए। आपने वसाई रेफरेंस मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, नाउ कैन स्टार्ट। नो प्रॉब्लम। Sajjad, you are not audible. ज़्यादा आप शायद अनम्यूट हैं, या आप अच्छा आपने वो नहीं किया, अनम्यूट नहीं किया है तो अनम्यूट कर। नहीं, दो लोग, दो अलग अलग। ओके, आप जिस स्क्रीन से शेयर कर रहे हैं ना उसी से प्रेजेंटेशन करिए, उसमें भी माइक है, आवाज़ तो। हेलो, Manageable components. क्या? These manageable components is called the layers. So the problem of building a computer network, it is a big one. And we are decomposing that into a smaller parts, which we call the layers. We got two benefits from this. One, it provides us more modular design, and it is easy to troubleshoot. The OSI means Open System Interconnection Model. The purpose of this OSI model is to facilitate communication between two different systems without requiring change to the logic of the underlying hardware and software. So we are going to establish a communication between two different systems. Two different systems means the two systems with two different operating systems, even two different devices with two different functionalities. So in terms of hardware and software, also they may be different. So the two different systems are going to communicate with each other with the help of or with the guidelines provided by this OSI model. So that is, we don't require any change to the logic of underlying hardware and software. These are the layers which are present in the OSI model. The first one is physical layer, data link layer, network layer, transport layer, a session layer, presentation layer, and application layer. The order of these layers is important. If anyone of you wants to remember the order of these layers, there is a sentence which is, please do not touch Steven's pet alligator. This sent from with the help of this sentence, we are able to remember the order of these layers. The application layer, presentation layer, and session layer. These three layers are called the user support layers. And this network layer, data link layer, and physical layer are called the this application layer, presentation layer, and session layer is called the user support layers, and this network layer, data link layer, and physical layer are called the network support layers. Let's take an example. Let's see how each layer interacts with other layers. In this scenario, device A and device B, there are two devices, device A and device B. And these two devices are connected to a network, and there are some intermediate nodes. Let's suppose that this intermediate node is a router. This is also an
router. So if we want to send the data from this device, device A to device B, whatever this computer is generating a data, it has to be placed on this line, this physical line. Before placing on this cable, it has to go through all these 7 layers. And finally, this physical layer, is going to place the data on this cable. The user who is sitting on this computer A, will open an application, and that application is only going to generate the data. The data generated by this application layer is handed over to the presentation layer, then to the session layer, and after that it is handed over to the network layer, data link layer, and this physical layer. The data generated by the application layer, there is an important layer which is called the transport layer. And this one is important. The intermediate nodes, these nodes like routers and switches, we know the routers focus on the third layer, we call it the network layer, and the switches are focused on the second layer, on the data link layer. These intermediate nodes focus only on this network support layer, because we don't want our application layer is accessed by some intermediate node. Let's assume the application layer generates a data which is I want to send this data. My password is Sajad Ahmed @123 to the other user, which is sitting on the other computer. The user wants to send this information to the other user. This information generated by the application layer is given to the presentation layer. This presentation layer modifies this data. It converts this information into some format. After conversion, it is then given to the session layer to carry out the session layer activities. There are various activities which are carried out by the session layer, transport layer, network layer, and data link layer. We will try to understand, we will try to deliver our presentation on that in detail in the upcoming slides. The transport layer adds the transport information to this entire data. Then it is given to the network layer. Network layer also adds the information, network information to this data. And then data link layer also adds the data link layer information. This entire information is then given to the physical layer. This physical layer converts this data into the bits. If there is a physical medium, we can say if there is a medium, if there is an optical fiber, then this data is converted to the light. And if there is a wireless medium, then this data is converted into the EM wave. So the services which are provided by these layers, application layer, it enables the user to access the network resources. Sir, am I audible? बोलो continue. This application layer, it enables the user to access the network resources. Whether it is a human or a software, to access the network, the application layer is responsible for providing the services to the user, which are network virtual terminal. The network virtual terminal, it is a software version of physical terminal, and it allows a user to log on the remote host. Let's suppose that if this device A wants to send the data to this device B, this device B is called the remote host, and this is local device A. The file transfer access and the management is also the service which is provided by this application layer. This application layer allows the user to access the file in a remote host to retrieve files from a remote computer for use in local computer and to manage files in remote computer locally. The other functions include mail service and directory services. The presentation layer allows us to deal with the syntax and semantics of the information exchanged between the two systems. The syntax refers to the structure or the format of the data.
meaning the order in which they are presented. It indicates how to read the bits. And the semantics means it refers to the meaning of each section of bits. How is a particular pattern to be interpreted, and which action is to be taken based on that interpretation. The services which are provided by this presentation layer are translation, encryption, and compression. Translation means converting a message into a compatible bit stream. That is, the presentation layer at the sender changes the information from its sender dependent format into a common format, which are while as the presentation layer or receiving side changes the common format into the receiving dependent format. This is translation. The encryption means converting a plain text into a cheaper text. It is done at the sending end. While as converting a cheaper text into a plain text, it is called decryption. It is done at the receiving end. The compression means data compression reduces the number of bits containing into the information. Then there is another layer which is called the session layer. It establishes, maintains, and synchronizes the interconnection, the interaction among the communication devices. The services which are provided by the session layer is dialogue control and synchronization. If we are able to understand what is dialogue control and synchronization, we are able to understand what is the function of the session layer. The dialogue control means it allows two systems to enter into a dialogue. It allows communication between two processes to take place either in a half duplex, that is we call it the one way at a time, or in a full duplex, that's called the two-way at a time mode. Suppose if this device A wants to send the data to this device B, then we will say the dialogue control means if only device A is able to send the data to the device B and device B is not able to send the data to the device A, then this is half duplex mode. If both of these devices are able to transmit the data at a time to both of the devices, then it is called the full duplex mode. The synchronization means the session layer allows the process to add the checkpoints or synchronization pointers to a stream of data. The checkpoints from the receiving end, while when the message is received, sends an acknowledge to the sender that the message has been received up to this checkpoint. The transport layer, it is responsible for the process delivery of the entire message. The transport layer means the transport layer is responsible for process delivery of entire message. A process is an application program running on a host. The services which are provided by this transport layer are service point addressing, which we call the port address. Computers often running several programs at the same time. Port address is the port number at which the particular application is running. The transport layer adds the header, which consists of the port address to the packets receiving from the upper layer. Then there is a segmentation and reassembling. The message is divided into transmittable segments with each containing the sequence number. Now, these numbers enables the transport layer to reassemble the message correctly upon arriving at the destination. This is what we call the segmentation and reassembling. The connection control means the transport layer can either be connectionless or connection oriented. A connectionless transport layer treats each segment as an independent packet and delivers it to the destination, while as it in connection oriented transport, first the connection is established to the destination and then the message is delivered. The other information, the other functions of this transport layer includes error control and flow control. After this session, after this
session layer and transport layer, the network layer, data link layer, physical layer, and the working of this OSI model, OSI reference model, I hand over this presentation to the Muntazir Ali, who will be presenting the second part of this presentation. If anyone having any queries till now or at the end of this presentation, please feel free to ask us. Any questions? किसी को है? मैंने चैट बॉक्स में कुछ सवाल भी पूछे हैं क्या? आशिक कुछ कहना है आपको? मैंने कुछ सवाल पूछे थे तो उस पर मैं फोकस कर देता हूँ। मैंने अब अभी इस ग्रुप से सवाल पूछे थे कि इसमें से कौन सा पोर्ट नंबर है, सबसे पहला सवाल था, जो वेबसाइट के लिए होता है, ठीक है ना, 8080804443 ऑल ऑफ अबव, ठीक है। तो हिलाल ने आंसर दिया 8080, आदिक ने 80, जुबैब 80, फैजल 80, मीर अल्ताफ ने दिया ऑल ऑफ अबव। तो ऑल आर ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो आपका पोर्ट नंबर है, ये सभी वेबसाइट के लिए होता है। सबसे पुराना जो पोर्ट था वेबसाइट लॉन्च करने के लिए वो 80 था, उसके बाद 8080 आया, और जो लेटेस्ट अभी जो वेबसाइट लॉन्च करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है वो 443 है। जब आप वेबसाइट लॉन्च करते हैं तो उसमें एक HTTP भी लिखा होता है, एक HTTP यस लिखा होता है। तो जो यस लिखा है वो 443 है, जिसमें आपका सिक्योरिटी वाला जो फीचर है इम्प्लीमेंट होते हैं, राइट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो होपफुली कि जिन्होंने टुकड़ों में आंसर दिया इसको एक बार रिकॉल करेंगे। और मैंने अगला सवाल पूछा था कि इनमें से कौन सा लेटेस्ट स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो आकिब आपने, हाँ, तो मैंने स्टैंडर्ड जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो चैट बॉक्स में है आप खोल के देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कौन सा स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है, तो इसमें सबसे पहला जो इंटरनेट प्रोटोकॉल आया था वो आईपी प्रोटोकॉल था, फिर टीसीपी आया, फिर टीसीपी आईपी कंबाइंड रूप से आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है आज भी चल रहा है। तो आज की डेट में जो स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो टीसीपी आईपी, यानी जो ऑप्शन सी है दैट इज द राइट आंसर। ओएसआई कोई प्रोटोकॉल नहीं है। Reference model, when we add the security layers to the TCP IP model, then we called it OSI reference model. ओएसआई इज द रेफरेंस मॉडल। Yes sir. तो इसी में जो नेक्स्ट सवाल पूछा था हमने इसी में कि इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। टीसीपी, टीसीपी आईपी और आईपी, ये तो पुराने इंटरनेट प्रोटोकॉल थे। टीसीपी आईपी स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो ओएसआई कोई प्रोटोकॉल नहीं है, रेफरेंस मॉडल है। इसके लिए मैंने आपको एक बहुत ही रफ मैनर में भी बताया था कि किस तरीके से जो नोकिया फ़ोन है उस पर कवर कोई भी लगा दो लेकिन फ़ोन तो वही रहेगा। तो जो प्रोटोकॉल है वो टीसीपी आईपी है। बाकी जो लेयर ऐड की गई, जैसे अभी आप प्रेजेंटेशन में दिखा रहे थे, तो इसमें जो बाकी जो लेयर ऐड की गई, बाद में क्या लेयर ऐड करी गई, सेशन लेयर ऐड किया गया, प्रेजेंटेशन लेयर ऐड किया गया, ठीक है ना। तो ये जो सिक्योरिटी लेयर है बाद में ऐड की गई थी। तो ये सिक्योरिटी पर्पज मेन इनका उद्देश्य था कि सही चीज़ सही जिसके अंदर जिसको भेजा है उसी को रिसीवर को मिले, ठीक है। तो इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं, वह साइज रेफरेंस मॉडल है, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कीप इन द माइंड, ठीक है। और एक क्वेश्चन और हमने आपसे पूछा था, राउटर इज एग्जाम्पल ऑफ, राउटर कौन से लेयर पे काम करता है। सर थर्ड लेयर पे। हाँ, थर्ड लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे काम करता है, राइट, ठीक है ना, डेफिनेटली। तो इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और बहुत अच्छा आंसर था, प्रेजेंटेशन में भी आपने छोटा बहुत अच्छा बनाया, ठीक है। तो थोड़ी बहुत मुझे भी खुशी है कि आप लोग उस चीज़ को अब एज ए बुक, एज ए पर जो भी नॉलेज होते है उसको मैच कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत, सबके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो आपके लिए, ग्रुप के लिए बहुत बहुत बधाई और थैंक यू। यानी कोई क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ सकते हैं, आप अनशेयर कर सकते हैं अपना ये जो प्रेजेंटेशन है। और आप जो लोग प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वो मेरे को व्हाट्सएप पे प्रेजेंटेशन का जिन लोगों ने किया है एक्चुअल में, जिन लोग कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप पे आप उस प्रेजेंटेशन का नाम जरूर लिख दीजिए और किन किन लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाया है, ठीक है। तो इसका जो एड ऑन है हम सर्टिफिकेट पे कर देंगे अलग से कि आपने प्रेजेंटेशन दिया था तो। सर ग्रुप के हिसाब से किस ग्रुप ने बनाया है। हाँ, ग्रुप में
ठीक है ना। तो आप पूरा बना के मेरे को जो करेंगे वही मैं ऐड कर दूंगा। अभी तो मैं नॉर्मल शेयर दूंगा, जो अलग वाला जो सर्टिफिकेट है उसमें ऐड कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, इसको बना दीजिएगा और प्रॉपर भेज दीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट ग्रुप कौन सा चलेगा वॉलंटियर? सर ग्रुप ई सर। ग्रुप ए ग्रुप पे ई ग्रुप सर। सर। कोई भी चलो, ग्रुप सी। आशिक करना चाहते चलो आशिक करने दो, कोई बात ग्रुप नहीं यार, ठीक है, कोई इशू नहीं, करो आशिक। आपका ग्रुप कौन सा है? सर ग्रुप ए। ग्रुप ए सर। ठीक है, तो आप लोग दोनों ही तैयार हैं तो फिर इट्स ओके। तो वेलकम। और आपका भी सवाल मैं उसी ग्रुप में पूछूंगा, तो उसमें प्लीज आंसर दीजिएगा। सभी लोग दे सकते हैं लेकिन उस ग्रुप के लोग जरूर आंसर करें जिस ग्रुप का प्रेजेंटेशन हो रहा है। बाकी लोग भी दें, बहुत अच्छा रहेगा। तो आप अपना पीपीटी के माध्यम से देंगे फैजल? यस सर, पहले हाँ हाँ पहले जिया स्टार्ट। आपने दिया था ना? हाँ हाँ अभी कौन करेगा? चलिए शुरू करिए। सर मैं करूँगा। सर जिया स्टार्ट करेगा पहले। ओके ओके ओके। स्क्रीन आपको वेलकम। दिखाई दे रही है? यस सर। चलिए। Welcome all of in this presentation. Our presentation is about 5G wireless communication. Now, first we will take the review of what is 5G wireless communication. 5G is actually fifth generation wireless technology. It is a complete wireless communication with almost no limitations. It can be real wireless world, and that means in today's world we need smart cities, buildings, vehicles, etc. So we can use 5G communication. It will help us to monitor these things. Also, it has highly transmission speed. Now let us take a review of evolution from 1G to 5G. First, we use 1G, then after it 2G, then 3G, 4G, and finally 5G. Now let us take the review of these networks. First, we use 1G. 1G, it means first generation developed in 1980s and completed in early 1990s. It was based on analog system. Its speed was up to 2.4 kilobits per second. Advanced mobile phone system (AMPS) was the first mobile on 1G. It was launched by US. In 1G, it allows user to make voice calls only in one country. Now, second network is 2G. 2G means second generation. It was developed late in 1980s and completed in late 1990s. It was based on a digital system. Its speed is up to 64 kilobits per second. It provides services such as digital voice, and also it gives the facility of SMS with more clarity. But it gives us access only to semi-global. Now 3G means third generation. It was developed in late 1990s and in early 2000. Its transmission speed is from 125 kilobits per second to 2 megabits per second. It gives us a superior voice quality than 1G and 2G, good clarity in video conference. Also, it gives the facilities like email, online shopping, banking, games, etc. Also, it has global roaming. Now, 4G, it was developed in 2010. It is faster and more reliable than 1G, 2G, and 3G. Its speed is up to 100 megabits per second. It has high performance, and it gives us roaming. And it is low cost than the three networks. Now, finally, we have 5G communication. 5G means fifth generation.
it gives us 10 times more capacity than other networks. Its expected speed is 1 gigabits per second. It is more faster and more reliable than 4G. It has it supports globally mobility, and it is lower cost than previous generations. Now, I would like to invite Ashik to forward the remaining presentation. Assalamu alaikum, everyone. Am I audible? Alaikum salam. Yes. So I will be discussing about how does 5G works and on what spectrum band 5G works. So in communication, there we are having two types of transmission media, and these are wireless and wired. In wired, we are using the optical fiber cables, and in wireless, we are having the media such as atmosphere. And we are using there the frequency waves such as radio frequencies. In wireless communication, we use radio frequencies to carry information through the air. 5G operates in the same way, but it is using the higher radio frequencies, allows us to carry the information at a much faster rates. As we are having here the higher frequencies, so here the bandwidth wavelength decreases. That is why these are having the less penetrating power, and they travel. There is a limitation that the duration is, or we can say that the sending. These cannot be sending over larger distances, and these are easily blocked by the physical objectors. To overcome this problem, 5G will utilize multiple input and output antenna to boost the signal and capacity across the wireless network. Besides MIMO, 5G will also use the technologies such as beamforming, millimeter waves, small cells. All these new technologies could be used to give the 10 GB to a user with almost negligible latency. After I will be discussing about the on what spectrum the 5G works. Basically, 5G works on 3 different types of spectrums. These are the low band, mid band, and high band. The sub 1 gigahertz is called as a lower band frequency, and it is less than 1 gigahertz. Due to the lower frequency, the coverage is wide, but speed is not so good as compared to mid-band and the high-band frequency. And the sub-6 gigahertz, it provides us a good speed, and the coverage is a little bit less as compared to the sub-1 gigahertz. After that, we are having the millimeter waves. These are the bands that is having the frequency from 6 gigahertz to almost 100 gigahertz. There we are having two different types of waves. These are the centimeter waves and millimeter waves. The range of centimeter waves, these are from 6 gigahertz to 30 gigahertz, and after that we are having the waves, that is 30 gigahertz onwards. These are having the waves are having advantage that it provides us better speed, but the coverage is not so good. I would like to invite Faisal to discuss about the advantages and conclusion. Faisal. हाँ, Yes, sir. एनी क्वेश्चन किसी को? और कुछ है इसमें आपके पास? Yes, sir. Advantages and Okay. applications of 5G. Now I would like to present the last part of our presentation, that is advantages, applications, and conclusion. Advantages. First advantage is 5G has very high speed. It is having a speed of almost 10 gigabytes per second. This means we can download our content in 5 seconds. Second, 5G has almost negligible latency. Actually, latency is the amount of time it takes for a packet of data to be transmitted. Another application is 5G has higher capacity. This means maximum amount of data can be reliably transmitted between
different locations over a network. Another 5G also has low cost per bit. It means the price we have to pay for specific amount of data is very less. Slide. Now applications. Now it is applications of 5G. 5G technology will provide a wide range of applications from retail to education, transportation to entertainment, small and smart homes to healthcare. Its biggest application is that 5G is high-speed mobile network. It is Internet of Things, connecting everything, that is smart home, smart cities, smart farming, and autonomous driving, extra. Now conclusion part. 5G is one of the most sophisticated wireless technology we have ever developed so far. It will revolutionize the entire area where wireless network can be used for efficient and secure communication. The socio-economic part of 5G has yet to be analyzed. However, it will make significant impact on every areas where wireless transmission inevitable. Thank you. Thank you. Thank That's you, all. and Faisal. It was all from our presentation. Thank you all. Thank you. A nice presentation. And one last question for all of you. Typing just IP allotment, which part of the communication? Option A is the Wi-Fi. Option B is the Bluetooth. Option C is the LAN port. And final option is the all of above. Okay. So during your presentation, I asked a lot of questions regarding the mobile communication. तो सम क्वेश्चन कुछ लोगों ने कुछ गलत भी किया है, तो उस पर हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो गलत किया है उस पर हम बात करते हैं। तो फुल स्क्रीन में आता हूँ। ओके, तो मेरा जो पहला सवाल था, इन विच जनरेशन SMS फैसिलिटीज स्टार्ट। तो अभी आप प्रेजेंटेशन में भी बता रहे थे कि 1G एनालॉग सर्विसेज था, ठीक है। तो डेफिनेटली SMS जो है वो एनालॉग सर्विस के ऊपर हम लोग नहीं चालू कर पा रहे थे। तो वास्तव में जो SMS फैसिलिटी स्टार्ट की गई वो सेकेंड जनरेशन एनानोवल थी, ठीक है। तो अगर सवाल में पूछा जाए तो डेफिनेटली इसका आंसर सेकेंड जनरेशन होगा। वन जनरेशन हमने प्रैक्टिस जरूर की थी। वन जनरेशन में मुझे याद है कि मैंने ही जब वहाँ पे, हालांकि इंडिया में नहीं था, लेकिन जो शुरुआती टेस्टिंग की गई थी, तो हम लोग उसमें जो सिग्नल आते थे तो सिग्नल पे ही कंपनी का नाम लिखा होता था, तो सिग्नल पे ही हम मैसेज किया करते थे। वैसे SMS कह सकते हो, लेकिन वो SMS था नहीं बेसिकली। और हमें याद है कि एक मैच चल रहा था, क्रिकेट मैच। तो क्रिकेट मैच पे जो बैटिंग करने वाली टीम थी, तो वो कितने रन बनाए वो स्कोर हम लोग उससे वो शेयर कर रहे थे, ये इतना स्कोर हुआ, क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन नहीं था। बिफोर सेकेंड जनरेशन मोबाइल का जो प्रॉपर यूज है उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं। ये रेयर था, बहुत पुरानी कंपनियां थी। एयरटेल सबसे पुरानी कंपनी है, उसके पास में थी। BSNL उसमें तक अभी तक स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका आंसर 2G होगा। और GSM किसका एग्जाम्पल है? डेफिनेटली ये भी 2G का ही है, क्योंकि GSM के अंदर ही आते ही हम लोगों ने SMS GPRS इंटरनेट की पहली सेवा भी इसी के अंदर हमने चालू की थी, बट स्पीड बहुत ही कम थी। तो इसमें सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। वीडियो कॉल, टेलीविजन, मल्टीमीडिया सर्विसेज पॉसिबल, ये 3G जब सेवा शुरू हुआ और BSNL सबसे पहले चालू किया था, फिर MTNL ने चालू किया था। तो इसमें तीनों सर्विसेज पॉसिबल हुआ 3G, और 3G के आने के बाद ही जब 4G आया तो पूरी की पूरी चीज़ें बदल गई। तो इसमें भी ऑलमोस्ट सभी ने आंसर ठीक दिया है। फैजल, आपने डायरेक्टली 4G पे पहुंच गए। तो पहले 3G में शुरू हो गया था, 4G तो अभी आया 2016 में।
फैजल आपने क्यों लिखा कि 3G हैज नो वॉइस एंड वीडियो अवेलेबिलिटी? सर 3G में मतलब वॉइस और वीडियो एक टाइम पे नहीं प्ले होता था ना, मतलब वॉइस और वीडियो में सिंक्रोनाइजेशन नहीं थी। मतलब अगर आप 3G में वॉइस और वीडियो एक टाइम प्ले, मतलब वीडियो कॉल में एक टाइम आप वॉइस और वीडियो नहीं कर सकते थे। वो आपका हाँ ठीक है, लेकिन हमने जो सवाल पूछा ना, सवाल को पढ़ो प्लीज, रीड आउट ऑन क्वेश्चन में। माइंड को बिल्कुल सही रखना है, आपने जो सोचा बिल्कुल सोच के लगाया, लेकिन क्या सवाल वो पूछा गया था? आप अगेन रीड आउट द क्वेश्चन। आपने पढ़ा सवाल? यस सर। क्या पूछ रहे हैं मुझसे? हमें तो आप कह रहे हो हमने वो सवाल तो नहीं पूछा है ना। यस सर, 3G हमारा में हमने ही। पूछा कि क्या वीडियो कॉल संभव है, टेलीविजन संभव है, या मल्टीमीडिया सर्विस संभव है, यही तो यस पूछा है। सर, संभव है 3G में। संभव है ना, सिंबल सी बात है। तो आपने जो किया एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल से मैच नहीं कर रहा हो। क्वेश्चन आंसर देते हुए थोड़ा सा माइंड को आप कूल रखेंगे तो डेफिनेटली आप वो चीज़ें क्लियर हैं। लेकिन ऐसा कि हम कभी कई चीज़ पूछते हैं। अभी आपको इंडिया में एक बहुत ही पॉपुलर पॉलिटिशियन है, आजकल बड़ा फेमस हो रहे हैं डे बाई डे, अरविंद केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। और अभी वो पूरे पंजाब में भी पूरा उनका राज हो गया है, ठीक है ना। तो ये शुरू में जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ था, इन लोगों ने जब अपना पॉलिटिकल शुरू किया था, तो आपको ध्यान होगा कि ये आंदोलन बहुत करते हैं, ठीक है ना, बार बार पॉलिटिकल जो आंदोलन होता है उस पर करते हैं, ठीक है। तो उस समय जो भी गवर्नमेंट थी, पहले मनमोहन सिंह जी की थी, फिर बाद में मोदी साहब की आ गई। तो उस समय क्या हुआ, एक छोटी सी घटना सुनाते हैं। तो इन्होंने एक मनीष सिसोदिया जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने एक अप्लीकेशन लिखी कि इसमें ये बोला गया कि भाई आपकी सारी मांगे पूरी कर दी जाएगी, आप आंदोलन बंद कर लीजिए, अगर एक नहीं पूरी करेंगे तो फिर आप अगेन से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो उस समय एक ये थे हरियाणा में मनीष सिसोदिया जी, और केजरीवाल जी थे दिल्ली में। तो केजरीवाल जी ने एक मैसेज लिखा अपने फ़ोन पे कि चैट किया, इसमें लिखा आंदोलन रोको मत जारी रखो। अगेन आई रिपीट, आंदोलन रोको मत जारी रखो, उन्होंने एक मैसेज टाइप किया, ठीक है। अब इसको पढ़ने वाले के ऊपर है, क्योंकि इसको जो हरियाणा पुलिस थी उसने कहा कि नहीं, आप आंदोलन आपने लिखा है, हरे ये केजरीवाल साहब ये कहते रहे कि मैंने सिसोदिया जी को ये लिखा है आंदोलन रोको मत जारी रखो, ठीक है ना। जो आपका जो स्ट्राइक है उसको स्टॉप करिए, उसको कंटिन्यू नहीं करिए, मैंने ये लिखा आंदोलन रोको मत जारी रखो, ये इन्होंने लिखा था। लेकिन हरियाणा पुलिस ने कहा नहीं, आपने लिखा है आंदोलन रोको मत जारी रखो। आर यू नो अंडरस्टैंड व्हाट आई से, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। देखने का Yes, जो yes, नजरिया sir. होता है, शब्दों में कोई चेंज नहीं था, ठीक है, लेकिन देखने वाले का जो नजरिया था बिल्कुल उलट था। एक तो कहता है रोको, दूसरा कहता है नहीं ये रखो, तो किसकी बात? तो इसमें जो कमा लगाना था, एक कमा वर्ड होता है जो बीच में सेपरेट करता है, वो वर्ड मिसिंग है, कमा लगा देते तो दैट इज डेफिनेटली वो चीज सही हो जाती। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता इसी क्वेश्चन में साइमल्टेनियसली वर्ड यूज कर देता, तो फैजल आप यू आर डेफिनेटली योर आंसर इज वेरी गुड। लेकिन मैंने कहीं साइमल्टेनियसली वर्ड यूज नहीं किया है, तो सिंपल सवाल पूछा है कि दिस इज अ पॉसिबल, हाँ या ना, ठीक है ना। तो होपफुली कि एक्सपीरियंस के साथ इन चीज़ों को आप और गेन करेंगे और सीखेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्मार्ट कम्युनिकेशन। स्मार्ट कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? ये सेंसर बेस हो सकता है, मेमोरेबल सर्विस हो सकती है, या आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो सजाद ने आपने लिखा है बी, केवल आपने मेमोरेबल लिखा। तो मैंने सर आपको ये स्मार्ट का गलती से डेफिनेशन बताया था, यस यस। जी सर, ये मिसप्रिंट हो गया, इसलिए डी था इसमें तो बी लिखना है। हाँ ये सारे पॉसिबल है ना। जी सर, पॉसिबल सारे, डी लिखना था सर, गलती से बी लिख दिया सर। तो सबने बी मार दिया, या सजाद ने आज लीड किया है तो आज हम सब बी मार रहे हैं। क्यों भाई जुबैर, मीर अल्ताफ, फैजल, आप थोड़ा यहाँ सोचे लेकिन सी तक नहीं जा पहुंचे। स्मार्ट कम्युनिकेशन जिस पे इंटरनेट दिया जा सकता है उस पर आईपी तो देना ही पड़ेगा, और आईपी कम्युनिकेशन तो कहलाता ही है, ठीक है। तो आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई। आतिक ने आपने बिल्कुल सही, लास्ट में जाकर सही लिखा है, सजाद आपने इस तरफ
अशरफ ने भी बिल्कुल ठीक लिखा है, फिलहाल ने भी लिखा राइट, ठीक है, इट्स ओके। आईओटी जो सर्विस है वो किस जनरेशन में इनेबल की गई है? आजाद सीधा, अशरफ सीधा 5G पहुंच गए। जो आईओटी सर्विस है वो बेसिकली 4G का है। अभी जो हमारा जो कम्युनिकेशन है 4G में वो हम लोगों ने चालू किया है नया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 3G में हमने इंटरनेट चालू कर दिया था, ठीक है, और क्योंकि हमारे पास डिवाइसें अभी स्मार्ट नहीं थी तो उस पर हमने अभी अप्लीकेबल नहीं किया, लेकिन वास्तव में इसका अप्लीकेबल जो शुरू हुआ वो हुआ है आपका 4G में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमने पूछा था आईपी अलॉटमेंट विच पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन डिवाइस। तो आईपी एड्रेस कहाँ पे अलॉटमेंट करते हैं? जहाँ से भी मुझे इंटरनेट देना हो, अगर मैं उससे जुड़ जाऊँ आपका वाईफाई से तो वाईफाई के पोर्ट को आईपी देंगे, अगर मैं लैन के पोर्ट पे दे दूँ तो लैन को दे देंगे, और अगर मैं ब्लूटूथ के पोर्ट को दे दूंगा तो ब्लूटूथ को हम लोग आईपी देंगे। तो वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, और आंसर भी आप लोगों ने ठीक ठाक बहुत अच्छा किया है, और कोई कंफ्यूजन था तो उसको एक्सप्लेन कर लिया। नेक्स्ट विच प्रेजेंटेशन, यस, कौन रह गया? Group E, sir. अशरफ, Yes, sir. Sajjad. ओके ओके, तो यू कैन स्टार्ट नाउ बाय पीपीटी। Yes, sir. ओके, यू कैन शेयर नाउ इमीडिएटली। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आंसर भी बहुत अच्छा दे रहे हैं। आईपी एड्रेस, वेरी नाइस। चलिए अब आईपी एड्रेस पे भी क्वेश्चन करेंगे। चलिए आप प्रेजेंटेशन दीजिए, आपने बनाया है और उमैद ने, ठीक है। Is my presentation visible, sir? या Good afternoon, all of you. Welcome all of you to this presentation. Our presentation is about IP addresses, and this presentation is presented by me along with Ubaid Ahmad Shah. So I will present the first part of the presentation, and the second part will be presented by Ubaid. So now first, let's take a look at the preview of the presentation. First of all, we will discuss about the introduction of IP address, and then the two versions of IP address, that is IPv4 and IPv6 IP addresses. After that, we will discuss about the different types of the IP addresses. No, basically IP address stands for the Internet Protocol. That is the set of rules governing the format of data sent over the internet or the other networks. Basically, IP address is a unique address or a local, IP address is a unique address that identifies a device on internet or that identifies a device on a local network. So it's an identifier which allows the information to be sent between the devices. This IP address contains a location information and makes device accessible for the communication. As all of us uses the internet services, so this internet needs a way to differentiate between the two computers, or we can say routers or the websites. So this IP address provides the way to, of the communication. Actually, this IP address is a string of numbers which are separated by the periods. And this IP addresses are expressed as set of 4 numbers which are called as octets. And each octet is having a length of an 8-bit. Now coming up to the versions of an IP address. The IP address has 2 versions, that's IPv4 and IPv6. The IPv4 is an Internet Protocol version 4, which contains the network ID and a unique host ID. This IPv4 IP address acts as an identifier for each devices that are connected to the internet. So we use the IPv4 IP addresses. This IPv4 address has a length of 32-bit.
that are divided into 4 parts, which we call as octets. And each octet has a length of 8-bit. And each number in an octet ranges between 0 to 255. So the IP address can produce, this IPv4 address can produce up to 2 raised power 32 possibilities. That means that we can produce almost 4 billion possible unique addresses with this IPv4 IP address. Now coming up to the IPv6 IP address, IP4, in IPv4, each bit in a octet can be either 0 or 1. If the bit is 1, then the number represents will count. And if the bit in IP4 address is 0, then the number it represents cannot be counted. Now coming up to the IPv6 IP address. This is the Internet Protocol version 6 IP address having 128-bit hexadecimal addresses that are arranged in 8 groups. And each group having length of 16 bits. And these sets are separated by a colon. So in IPv6 IP address, each hexadecimal character represents a 4-bit. So this IPv6 IP address ranges from 0 to FFFF. That means it ranges from 0 to 65535. In this IPv6 IP address, there are 2 raised power 138 possibilities. That means we can produce up to 340 trillion unique possible addresses from this IPv6 IP address. So this is the example of IPv6 address. You can see that there are this has 8 groups, and each group have 4 bits in this IPv6 IP address. Coming up to the next, that's the types of the IP address. First, we can say what is consumer IP address. Basically, consumer IP address is of 2 types. First one is the private IP address, and another one is public IP address. This private IP address is the IP address which is used to communicate within the network. That means we can, this IP address, when we communicate within the network, within the same network, that is called as the private IP address. So using this private IP address, the data or the information can be sent or received within the same network. And the public IP address, which is used to communicate outside network. It's a public IP address which is used to communicate outside the network, and this public IP address are basically assigned by the ISPs. That means these are assigned by the internet service providers. Now, basically, this public IP address has 2 types: the static and dynamic. This static IP address and dynamic both falls into the public category. Though static means static means constant, that remains permanent. The static IP address is an IP address which does not change. However, this can be changed with a network address, but they remain always permanent. These static IP addresses are considered as permanent internet addresses. So it provides a simple and reliable way to transfer their data. And the dynamic IP addresses are those IP addresses which change automatically. This type of IP address is usually provided by users to the ISPs, internet service providers. This dynamic IP address changes every time whenever your device gets rebooted, or whenever a new device is added to a network, or we can say whenever the network configuration gets changed. So if a dynamic address is not in use, it can be automatically assigned it to a different device. So basically this dynamic address is
dynamic address are assigned using either a DHCP, dynamic host configuration protocol, or we can say PPOE, point-to-point protocol over Ethernet. So this was all about the first half of the presentation. Now the second half of the presentation will be presented by the Ubaz Ahmed Shah. So I request Ubaz to present the second part of the presentation. Thank you, Sajad. Good afternoon, everyone. My name is Ubaz Ahmed Shah, and I'm going to present the second part of the presentation, that is classful IP address. The classful IP address is classified in different classes, that is class A, class B, class C, D, and class E. We will see these one by one in upcoming slides. Now let's have a look of in this slide. Each of these classes. Sajad, please move to the next slide. Each of these classes has a valid range of IP addresses. Class D and E are reserved for multicast and experimental purposes respectively. And IP addresses are organized in numeric order. There are around 4.3 billion IPv4 unique addresses. The order of bits in the first octet determine the classes of IP address. IPv4 address is divided into two parts, that is network ID and the host ID. The classes of IP address is unique to determine the bits used for network ID and host ID and the number of total networks and hosts possible in that particular class. Each internet service provider or network administrator assigns IP address to each device that is connected to its network. Coming to the next slide, the class A IP address. IP addresses belonging to class A are assigned to the network that contains a large number of hosts. In a class A type of network, the first 8 bits identify the network, also known as first octet, and the remaining have 24 bits for the host in that network. For example, here is an example of class A address 102.168.212.226. Here 102 identifies the network ID and the 168.212.226 identifies the host ID. The default subnet mask for class A is 255.0.0.0. Now moving to next slide, class B IP address. Sajad, please. Thank you. IP address belonging to class B are assigned to the network that ranges from medium-sized to large-sized networks. The first 16 bits help us to identify the network, also known as first 2 octets. The other remaining 16 bits indicate the host ID within the network. This is an example of the class B IP address 168.212.226.204, where 168.212 identifies the network ID and 226.204 helps us to identify the host ID. The default subnet mask for class B is 255.255.0.0. Moving to next slide, class C IP address. IP address belonging to class C are assigned to small networks. The network ID is 24 bits long and the host ID is 8 bits long. Mostly local area network uses this class C IP addresses to connect with the network. For example, this here 192.168.178.59 is an example of this class C IP address, and the default subnet mask for class C is 255.255.255.0. Now moving to class D, these IP addresses are
used for multicasting applications, and these are not used for regular networking operations. So there is no requirement to extract the host address from IP addresses. So class D does not have any subnet mask. So here is so the range of the class D IP address is 224.239. So this is an example for class D IP address 227.21.6.173. Moving to next slide, class E IP address. IP addresses belonging to class E are reserved for experimental and research purposes, or we can say simply for future purposes. IP addresses of class E ranges from 240 to 255. This class does not have any subnet mask. We have an example here, 243.164.89.28. This is an example of class E IP address. Here we have a diagram where we can see the class A, class B, class C, class D, and class E. Here is the range for class A IP address is from 0 to 127, and it falls in the host addresses. Similarly, for class B, the range is 128 to 191. Similarly, for C, 192 to 223. So the class D range is 224 to 239, and this is used for multicasting purpose. And class E is the range for class E is 240 to 255, and these are used for future purposes or experimental purposes. Now moving to next slide. So here is in class A, the IPv4 address, that is a 32-bit address. Here in class A, the first 8 bits are reserved for network ID, and the remaining 24 bits are reserved for host ID, which will give us the /8 subnet mask in class A IP address, that is 255.0.0.0. Similarly, class B, there are 16 bits for network ID and 16 bits for host ID, and it gives us the /16 subnet mask, or we can say 255.255.0.0. And in case of class C network, we have 24 bits for network ID and 8 bits for host ID, which gives us the /24 subnet mask, or we can say 255.255.255.0. Thank you so much. It was all about our presentation of IP addresses. Thank you. Thank you. Thank you. Now go for the discussion regarding the question answer. तो हमने इस दौरान बहुत सारे सवाल पूछे। इसमें अभी जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है सभी को इसमें, तो काम करते हैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने जो सवाल आपने प्रेजेंटेशन शुरू किया उसके रिस्पेक्ट में मैंने क्वेश्चन शुरू किया। सबसे पहला जो सवाल किया था हमने, आ जाते हैं, यस, पहला क्वेश्चन हमने शुरू किया था कि इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है। ठीक है ना, तो हमने सवाल सबसे पहले शुरू किया था। तो इसमें जो मुझे लगा काफ़ी लोगों ने गलत आंसर शायद दे दिया है। तो वैलिड आईपी के बारे में मैंने बहुत ही क्लियर बताया कि जब वैलिड आईपी की बात होती है तो तुरंत आप दिमाग से ये चीज़ जो बुक्स की नॉलेज होती है उसको बाहर कर दें। आईपी के बारे में मैंने ये बोला था कि ये पहली बात तो 4 ब्लॉक में यानी 4 ग्रुप में तोड़ा जाता है इसको। हर एक ग्रुप 8-8 बिट का होता है, और एक ग्रुप के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक ग्रुप की वैल्यू जो है 0 से लेके 255 के बीच में वेरी करेगा, राइट। तो मुझे तो ये नहीं सोचना है कि आईपी एड्रेस जो है वो क्या मतलब क्लास ए बी सी डी होता है या नहीं होता है। हमने आपसे सिंपल सवाल पूछा कि ये जो मैं आईपी लिख रहा हूँ 4, क्योंकि मैंने ये चीज़ तो कहीं मेंशन नहीं करी कि क्लास ए का है, क्लास बी का है, क्लास फुल है। मैंने सिंपली 4 ऑप्शन दिए और कहा कि इनमें से कौन सा आईपी जो वैलिड नहीं होगा, वैलिड आईडी नहीं पॉसिबल है। तो आप उसमें डेफिनेटली जो ऑप्शन सी है
आप अगर सी के बारे में देखें तो जो मैंने बोला है 0 से लेके 255 के बीच में वेरी करना चाहिए, तो सी का जो पहला ब्लॉक है 258 है, तो डेफिनेटली ये नहीं होगा। होपफुली कि सभी लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। क्यों फैजल, एम आई राइट, यस और नो? क्योंकि इसमें से किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया, न फैजल ने, न रसीक ने, बाकी ने दिया, न बाकी समझ में नहीं आया। आकिब जी बशीर, सर, इसमें सी था आंसर। ठीक है ना, अब समझ में आ गया आपको? सर मैंने दिया था वो दूसरी क्वेश्चन की। हाँ, आपने दूसरा उसमें दिया, मैंने देख लिया, कोई बात नहीं, अभी आगे जाएंगे फिलहाल अभी। अब हाउ मेनी ब्लॉक इन IPv4, तो भाई 4 ब्लॉक यानी 4 ग्रुप में तोड़ते हैं, तो इसमें तो सोचना ही नहीं है रहील। सी आपने क्यों लिखा फैजल? ई और सी तो कोई मतलब नहीं है। ब्लॉक का मतलब कितने ग्रुप में तोड़ा गया, 8 का 4 ब्लॉक बनाए गए ना। और क्लास पूछे या फिर वैसे पूछते ग्रुप, तो उसमें आंसर ABCD होता तो वो समझ में आता। डेफिनेटली 4 वर्जन का मतलब जो V4 है ना, उसका मतलब ही होता है 4 ब्लॉक। और IPv6 में अगर पूछा जाए तो कितने ब्लॉक होंगे, तो कितने होने चाहिए? 6 ब्लॉक होने चाहिए, जी सर। ठीक है ना। तो यस सर। खान बाद में आपने सही आंसर दिया था 258, ओके मैं मान गया। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सबनेट ऑफ IP, अभी आपके प्रेजेंटेशन में भी था, इन्होंने दिखा रहे थे। तो इस सवाल का सबनेट में किसने दिया है? सबनेट IP का जो ऑप्शन है सी सही होना चाहिए था। यस, खान आपने दिया है। अवैध था, आपने बाद में उस चीज़ का आंसर बिल्कुल ठीक किया है उसमें, यानी इस वाले को आंसर लगभग सही से है। जो 255.255.255.0 इसमें सभी ने सही दिया है। मीर अल्ताफ आपने बाद में बहुत आंसर दिया, वो बिल्कुल ठीक है, सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंगिंग टू क्लास ए IP एड्रेस? ऑप्शन है, क्लास ए का मतलब क्या होता है? क्लास ए का मतलब होता है कि पहला जो ब्लॉक है 0 से लेके 10 के बीच में शुरू हो और /8 हो, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो दोनों को फॉलो करता है? तो इसमें से बी और सी जो है दोनों को ही फॉलो करता है। इस सवाल का किसी ने आंसर दिया इस क्वेश्चन का? ये क्वेश्चन जो आपका एक क्वेश्चन था ना, आप चैट में देखिए, जिसमें मैंने ये सवाल पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग टू क्लास ए IP एड्रेस? क्लास ए का मतलब होता है वह IP एड्रेस सभी क्लास ए में आएंगे अगर उसका जो पहला ब्लॉक है 0 से शुरू होके 126 के बीच में जाए एंड /8 हो। तो ऑप्शन ए, पहला ब्लॉक 0 से लेके 126 के बीच में तो जा रहा है, लेकिन /16 है, तो ये क्लास ए का IP नहीं होगा। बाकी IP के बारे में चेक करते हैं। बी में पहला और /8 ये बिल्कुल वैलिड IP है। सी में 126 के पहले है, ये भी वैलिड हो गया, /8 है। लास्ट डी भी वैलिड हो गया। और ई, ए इसमें से जो बिलोंग नहीं करेगा ए और ई, ऑप्शन ए और ई। ऑल आर माई गेटिंग पॉइंट? आप चैट बॉक्स को देखिए, स्क्रीन शेयर नहीं हो यस रहा सर। होगा, ठीक है यस ना। सर। यस। ए और सी जो है वो ए को वैलिड IP है, बट ए की जो कंडीशन है उसको फॉलो नहीं करता है। ए की कंडीशन है कि जो पहला ब्लॉक है 0 से लेके 126 के बीच में जाए और /8 हो। तो ऑप्शन ए में पहला 10 तो दिया, लेकिन /16 है, तो पहला इनवैलिड हो गया। BCD तीनों इस चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। जो ऑप्शन ई है वो पहला ब्लॉक 0 है और उसको, और जो स्लैश है वो 24 है, तो पहला तो फॉलो करा, दूसरा नहीं करा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी का अगला क्या नाम है? नेट तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, जो मैंने पढ़ाया उसी में से बात करता हूँ। खान यासिर आपने आंसर सही दिया था उसके ऊपर वाले क्वेश्चन का, बिल्कुल ठीक है। इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी का अनदर नेम क्या है? जब मैंने प्रैक्टिकल सेशन कराया था तो DNS के लिए बोला था। DNS का मतलब, क्योंकि जितने लोग होते हैं सभी लोग IP एड्रेस से वेबसाइट नहीं खोलते, सभी लोग वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं, और वेबसाइट का नाम टाइप करके हमारा जो कंप्यूटर है एक ऐसे सर्वर के पास जाता है या राउटर के पास जाता है जिससे उस वेबसाइट का कॉरेस्पॉन्डेंस IP एड्रेस का इसकी जानकारी लेता है, तब वो जाके कम्युनिकेशन करता है, क्योंकि IP एड्रेस के बिना कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो जो ये काम IP एड्रेस का क्या वेबसाइट है उस IP एड्रेस पे, या इस वेबसाइट का क्या IP एड्रेस है, ये दोनों चीजें बताता है। ये फीचर एक तरह का टेलीफोन डायरेक्टरी नॉर्मल होता है, तो इंटरनेट में यही चीज टेलीफोन डायरेक्टरी कहलाती है। तो ये DNS इसका आंसर होगा। इसमें किसी ने भी सही नहीं दिया, थोड़ा सा दोबारा से उस वीडियो को जरूर देखिए जिसमें हमने
डीएनएस सेवा के बारे में एक्सप्लेन किया था, राइट। आप सभी को मेरा पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ आईपी टू यूजर इज कॉल्ड डीएससीपी। ये तो सभी ने बिल्कुल सही लगाया, इसमें कोई सोचना नहीं है। राशिक, आप कहाँ पे थे? आपने नेट क्यों लगाया? नेट तो मैंने पढ़ाया ही नहीं भाई, कोर्स में ही नहीं रखा था आपका। नेट का मतलब होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। जब मैंने वीलैन कराया था तो लोकल आईपी और ग्लोबल आईपी, मतलब जो आपका लोकल में जो भी आईपी रख रहे हैं और बाहर का जो मेन आईपी, इन दोनों के बीच के में कम्युनिकेशन जो स्थापित किया जाता है वो नेट के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो आपने बाद में तो सही लिखा है, शुरू में थोड़ा कंफ्यूज है। आईएसओ एसीएल के बारे में 1 से लेके 99 तक बिल्कुल ठीक है। डी तो मैंने बताया नहीं, 1 से लेके 100 से लेके 199 तक एक्सटेंडेड एसीएल है। स्टैंडर्ड एसीएल वह होता है जिसमें सारे कम्युनिकेशन बंद कर दिए जाते हैं, जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिकली के दौरान समझाया था कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई भी कम्युनिकेशन पूरी तरह से ब्लॉक करना है, नो इंटरनेट नो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, तो आप स्टैंडर्ड वो लगाएंगे एसीएल। और पर्टिकुलर सर्विस ब्लॉक करना है कि केवल टेलीफोनिक कम्युनिकेशन चलता रहे या ईमेल भी चलता रहे लेकिन केवल वेबसाइट ना खुले या ईमेल ना कर पाए, एक पर्टिकुलर सर्विस ब्लॉक करें, उसको स्टैंडर्ड एसीएल बोलते हैं। तो ये दो एसीएल हमने आपके कोर्स में कवर अप किया था, जिसमें स्टैंडर्ड एसीएल की रेंज जो हमने 1 से लेकर 99, अब जॉब एड खुले उसमें भी लिखा है और मैंने पढ़ाते समय भी बताया था, और आगे आपका 100 से लेकर 199 के बीच में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा था आप लोगों का प्रेजेंटेशन भी। और इसके अलावा और किसी को कोई प्रेजेंटेशन है कि हो गया सभी ग्रुप का? यस सर, सब ग्रुप का हो गया आई थिंक सभी का हो गया जो मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, जिन लोगों ने प्रेजेंट एक्टिव पार्टिसिपेट किया उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जोरदार तालियां। और आप सभी के साथ बहुत मज़ा आया, और आपने जो कल फीडबैक भी दिया बहुत ही शानदार दिया। तो मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इतनी मिलेगी, मुझे लग रहा था कि मैं बोले जा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को, तो काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया है। ठीक है, तो बस एक 5 से 10 या 15-20 मिनट की एक मीटिंग होगी जिसमें होपफुली कि अगर हमारी तरफ से, क्योंकि हमारे यहाँ एक फेस्टिवल आया हुआ है, बड़ा फेस्टिवल है होली का, तो अगर सारे लोग अवेलेबल हैं तो हम वो मीटिंग करा देंगे जिसमें हम लोग का इवोल्यूशन सेशन होता है, जिसमें आप अपने विचार रखते हैं कि आपको ये ट्रेनिंग कैसा लगा, और इस तरह की ट्रेनिंग में और क्या आप और ऐड ऑन करना चाहते हैं तो 2 शब्द आप बोल सकते हैं। कुछ कमियां हैं वो भी बोल सकते हैं, जो अच्छा लगा वो भी बोल सकते हैं। तो अपने में से जो मैंने ग्रुप में कम से कम 2 लोग ऐसे प्रिपेयर कर लीजिए पूरे बैच में से, जो करीब 1 मिनट या 2 मिनट के बारे में बोल सके। अदरवाइज मैं आपके फैकल्टी जो हेड हैं, जो इंचार्ज हैं, कोऑर्डिनेटर फारूक सर, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, तो वो लोग भी बात करेंगे, हमारी तरफ से भी होगा, तो आपका जो इवोल्यूशन है उस पर डिस्कशन करेंगे। और सर्टिफिकेट आपका रेडी हो चुका है, क्योंकि आप सभी ने बहुत टाइमली आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया था, तो शाम तक उसका साइन वर्जन भी मिल जाएगा मुझे। तो फिर उसके बाद मैं आपको फारूक सर को दे दूंगा, और फिर जैसा आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो होपफुली या तो आज दोपहर के बाद में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक वो होता है ना, कोई भी सेरेमनी होती है जैसे स्टार्टिंग होती है और एंडिंग होती है, तो स्टार्टिंग भी आपका थोड़ा सा वो हो गया, बहुत ही फास्टर तरीके से हो गया था कुछ, तो उसमें भी इंटरेक्ट नहीं हो पाए थे। तो एंडिंग में मैं ज़रूर चाहूँगा कि 15-20 मिनट आधे घंटे जो भी हमारे मैनेजमेंट इंटरेक्ट करे। बस एक ही डाउट है कि वो लोग अवेलेबल हैं या नहीं, ये मैं कंफर्म कर लेता हूँ। अगर अवेलेबल है, क्योंकि हम ऑनलाइन ही होना है तो घर पे भी होंगे तो भी आ सकते हैं, तो मैं उनसे पहले बात कर लेता हूँ और मैं आपको टाइम बता दूंगा। उस टाइम में सभी लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट करके एटलीस्ट सभी लोग रहें। आपके यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से भी रहेंगे, हमारी तरफ से रहेंगे, जिन लोगों ने ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइज कराया है। मैं तो एज ए फैकल्टी मेंबर और बैच इंचार्ज, और एज ए आप स्टूडेंट, हम लोग तो वो हैं इन्वॉल्वमेंट वाले पर्सन है ना, हम लोग तो बीच वाले हो गए। ठीक है, तो उन दोनों का बहुत ज़रूरी है मिलना और बात करना, क्योंकि किसी ने कहा कि आप ट्रेनिंग यहाँ करिए और किसी ने कहा आपको दीजिए, तो जब तक उन दोनों को पता नहीं चलेगा कि हमने आपको क्या पढ़ाया और आप जब एक दूसरे से बताएंगे नहीं, तब तक वो चीज़ पूरी नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो मिलेंगे। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल या क्वेश्चन कुछ हो तो यू कैन आस्क, या फिर तभी डिस्कशन करें जब मिलें। अदीप, मीर, आर यू देयर? यस सर। तो आप एक प्रेजेंटेशन सा बना दीजिए, 2 मिनट का 3 मिनट का, जो अच्छा से बोल सके। प्रशासन के साथ को अपने कॉलेज के उनके सामने बोलना पड़ सकता है, और हमारे पास में देखते हैं, क्योंकि मैं इस बारे में अवेयर बिल्कुल नहीं हूँ कि हमारा जो ईवी सेक्शन है जो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है
वो एंडिंग कैसे करेगा, आई डोंट अवेयर अबाउट दिस, ठीक है ना। तो हम अपनी तरफ से तैयार रहे, मेरी तरफ से तो आप लोगों ने इवोल्यूशन भरा है, मुझे तो वही पढ़ के सुनाना है। उसमें तो आपने मेरा नाम लिख के मेरी तारीफ कर दी है, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, ठीक है। तो वो सुन के ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने ठीक से पढ़ा होगा तभी सभी ने लिखा है। तो अब बाकी अब उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क, किसी के साथ कोई समस्या हो जरूर मेरे से बात करें, और जुड़े रहें आप लोग। और अभी आपका इधर आना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आते रहते हैं, आप इंडिया के अंदर आप कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। और गवर्नमेंट एक नई तरीके से आत्मनिर्भर वाला कोर्स शुरू करने की कोशिश कर रहा है कि सभी लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने वाले बने, लेने वाले कम बने, देने वाले। हालांकि आपके अभी कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट बाकी है, तो हो सकता है कि अभी इसमें थोड़ा सा समय लगे, लेकिन ये है कि एक कोशिश अच्छी की जा रही है, जिसका रिजल्ट करीब 3 या 4 साल बाद दिखेगा, जब सभी के पास एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली होगा। और आपके यहाँ तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इस ओके। और मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि आप लोग अगर गेट का पेपर दे पाएँ, गेट के बारे में जानते हैं ना, गेट का क्या है? यस सर। यस सर। अगर गेट क्वालिफाइड कर लें तो आप कोई भी जो PSUs हैं हमारे इंडिया के अंदर, उस पर आप डायरेक्टली गेट के थ्रू ही तुरंत इंटरव्यू कॉल हो जाती है, ठीक है ना। पिछले कुछ सालों से उस पर था। तो अगर आप गेट अगर निकाल पाए तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाएंगे करने के लिए, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, यही बोल सकता हूँ। बाकी फिर मिलते हैं विदाई समारोह में एक बार थैंक फिर यू से, सर। ठीक है ना। ओके, थैंक यू सर। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। Thank you so much. थैंक यू।